गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू मेजॉन एकेडमी। सो आज सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बायनोमियल। ठीक है, सो जो भी आए वो लोग बता दो, बोर्ड क्लियर है, ब्लर तो नहीं है, चेक कर लो सब लोग। No. Okay. Yes, good afternoon. So let's start with the question. लास्ट लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया था अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, देन मैक्सिमा मिनिमा और रोल्स थ्योरम भी हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, यही टॉपिक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन दैट इज, लास्ट टाइम कहां तक किया था हमने? हाँ, लास्ट क्वेश्चन वाज फंक्शन का डेरिवेटिव था, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a rectangle has area 50 centimeters square. So area of rectangle is equal to 50 centimeter square. ठीक है, and find its dimension when its perimeter is the least. So it is perimeter of rectangle, अगर आपको याद हो तो बता देना मुझे। और हम लोग एज्यूम करेंगे लेंथ, लेट x be the length of rectangle and y be the breadth of rectangle. So area बोला है हमें कितना? एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A is equal to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू y इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन x। ठीक है, नाउ उन्होंने क्या पूछा है कि शो दैट और find the dimension of the, find the length and breadth of the rectangle when its perimeter is least. Perimeter is least, that means perimeter of rectangle, since perimeter of rectangle is sum of all the sides, that means perimeter of rectangle L is equal, P is equal to 2 times L plus B, that is 2 times x plus y। ठीक है, एंड y का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, p 2 into x plus 50 upon x। when you multiply, perimeter will become 2x plus 100 upon x। ठीक है, now area perimeter is should be least। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग लीस्ट प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव, बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा लास्ट टाइम ने पढ़ा था फॉर मैक्सिमम वैल्यू, राइट? double derivative should be negative, for minimum value the double derivative should be positive। ठीक है, so least, that means you have to prove कि perimeter is the least, perimeter of the rectangle least होना चाहिए। so पहले differentiate करेंगे पहला डेरिवेटिव, एंड हमने सीखा है कि पहला डेरिवेटिव x के वैल्यूज के लिए होता है, राइट? बिकॉज वहां पे tangent, slope of the tangent is equal to 0, that means that point will be parallel to x axis। ठीक है, differentiating both sides with respect to x, so dp upon dx is equal to 2x का डेरिवेटिव 2, 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1 upon x square, it will become minus 100 upon x square।
ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो जब फिर से डेरिवेटिव करोगे तो वहां पे टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। जब फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। सो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100 को कांस्टेंट रखता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -2 स्क्वायर है, इट विल बिकम x raised to -2. So it will become -100 into -2 into x raised to n. अप्लाई करेंगे -2 -1, it will become -2, minus of minus will become plus 200 into x raised to -3, and x raised to -3, that means d square p upon dx square is positive 200 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में बाद में, पहले एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस dp अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू x इज हाउ मच? फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, 2 minus 100 upon x is equal to 0. So 100 upon x is equal to 2. So x is equal to 100 upon 2. That means x is equal to 50. So x is equal to 50 पे हमें चेक करना है ये वैल्यू मिनिमम है या नहीं। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, डी स्क्वायर पुट इन इक्वेशन 1, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d square p upon dx square will be 200 upon 50 into 50 into 50. That means it is positive. So 4 upon 2500, which is greater than 0. Therefore, perimeter of rectangle, we can say, अगर positive है तो क्या लिखोगे? Perimeter of rectangle is least. अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लीस्ट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, सॉरी, इट विल बिकम 200 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, एक्स इज इक्वल टू √50. सो √50 इज √50 का क्यूब, 50 इंटू √50 इंटू √50, सॉरी वो पॉजिटिव ही आएगा, स्टेटमेंट सेम रखेंगे, 200 अपॉन 50 इंटू √50, दैट मीन्स इट इज 4 अपॉन √50 विच इज ग्रेटर दैन 0. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लीस्ट. ठीक है। Now after this the value of x क्या मिलेगा? x का वैल्यू हमें क्या मिला था? x is equal to square root of 50. So y is also equal to 50 upon x, that is y is equal to 50 upon √50. You will get same √50. x और y, x is equal to y is equal to, यहाँ पे same value आ रहा है, that is √50. Therefore we can say that when length and breadth of the rectangle is same, that means it is a shape of square, then we can say perimeter of the rectangle will be least. अब √50 को हम अलग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. It is 25 into 2, that is x is equal to y is equal to 5√2 centimeter. Therefore length and breadth of rectangle is are 5√2 and 5√2 centimeter respectively. Such that perimeter is least. Clear है? Minimum 3 marks और maximum आपका सेक्शन डी में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन. ठीक है, इजी है. क्या क्या किया यहाँ पे हमने?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमने डायमेंशन अज्यूम किया एक्स एंड वाई विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दी rectangle, that is xy is equal to 50, y is equal to 50 upon x. Perimeter of rectangle हमें प्रूफ करना है, it should be least. So perimeter of rectangle क्या होता है, 2 times length plus breadth. So 2 into x plus y is equal to is, and y का वैल्यू 50 upon x है, तो 2 into x plus 2 into 50 is that is 100 upon x. डिफरेंशिएट किया, हमें क्या मिलेगा, dp upon dx is 2 minus 100 upon x square. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगेन फिर से किया, सो दैट हमें डबल डेरिवेटिव पता चलता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इज द लीस्ट, दैट इज मिनिमम. वो मिनिमम वैल्यू पे, कौन से वैल्यू पे मिनिमम है वो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज x इज इक्वल टू √50. अगर x का वैल्यू √50 है तो from that equation we can say that y is also same √50 and √50 is 5√2. So final statement हमें क्या लिखना है, length and breadth of the rectangle, given rectangle is 5√2 centimeter and 5√2 centimeter, such that perimeter is the least. ठीक है, is it clear everyone? And बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ये हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड का कॉन्सेप्ट है या सीबीएसई या आईसीसी. बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड्स एंड आईसीसी बोर्ड्स पे भी मिलेंगे. यू कैन रेफर दिस टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम. तो कोई भी बोर्ड हो, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वहां पे 12th स्टैंडर्ड में मिलने वाला. तो कॉमन टॉपिक है फॉर ऑल दी बोर्ड्स. सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी मेंशन नहीं है, बाकी टॉपिक्स आपको मिलेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट s of a moving particle at time t is given by. डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन, s is equal to, displacement s is equal to displacement s is equal to 5 plus 20t minus 5 plus 20t minus minus 2t square minus 2t square. अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं बेटा हम लोग. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है व्हेन द वेलोसिटी इज 0 फॉर 2 मार्क्स, मार्च 2016. अच्छा क्वेश्चन है. तो वेलोसिटी 0 दिया हुआ है ना. वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. The rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. मतलब क्या, हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट, विद रेस्पेक्ट टू x. इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 5 का डेरिवेटिव 0, 20, t का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 2 into t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. सो ds by dt is equal to 20 minus 4t. Since velocity is equal to 0, that is this is given, आपको दिया हुआ है. तो therefore ds by dt is equal to 0, मतलब 20 minus 4t is equal to 0. 4t is equal to how much it is, 20. t is equal to 20 upon 4, 5 so t is equal to 5 second. तो हमें टाइम नहीं दिया था, बट कंडीशन दिया था वेलोसिटी 0 है. अगर वेलोसिटी 0 होगा तो हमने इक्वल टू 0 किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम. आफ्टर दिस टाइम मिल गया तो एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? वी नो दैट एक्सेलरेशन इज a is equal to
The rate of change of velocity with respect to time, change of velocity v2 minus v1 upon t2 minus t2 t1, the rate of change of velocity, अगर जितना fast object move करेगा, that means it is accelerating, the velocity is changing, right? So if the velocity is changing with respect to time, you will get the acceleration. So a is equal to acceleration, a is equal to dv by dt, and what is v? v क्या हमारे पास 20 minus 4t. That means a is equal to 20, 0 है, derivative constant term is 0, t का derivative is -1, तो आंसर आ जाएगा कितना? -4 unit per second square. So acceleration of the object is, particle is -4 unit per second square. यूनिट अगर दिया हुआ है तो यूनिट मेंशन करोगे, नहीं दिया है तो आपको ऐसे डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है? Therefore acceleration is equal to, for 2 marks, acceleration a is equal to -4 unit per second square. अभी आपने फिजिक्स पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज डी एक्सेलरेशन होता है, राइट? जब स्पीड कम की जाती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम विल बी नेगेटिव कब? जब स्पीड द ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Test whether the function x minus 1 upon x square is increasing or decreasing. तो f of x आपको दिया हुआ है x minus 1 upon x, बहुत रेयरली आता है बट आ गया तो आपको छोड़ना नहीं. फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए आपको पहला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. Differentiating both sides with respect to x. Okay, fine. Okay, differentiating both sides with respect to x. फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो. f dash of x is, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1 upon x square, minus of minus will become plus 1 upon x square. अब x का कोई भी वैल्यू लोगे, any real number, any real value of x, this function का डेरिवेटिव will always be positive. कोई भी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू लोगे, आपका ये हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो वी कैन राइट दैट सिंस f dash of x is always greater than 0, therefore f of x is an increasing function. कौन सा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन. इजी है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आराम से रिवीजन में आप सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट लेक्चर से पहले.
Okay. Next question is वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और केस स्टडी में सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप। ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 5000 सब्सक्राइबर्स on its list and collects a fixed rent charges 3000 rupees per year from each subscriber. ठीक है, the company proposes to increase the annual rent and it is believed that for every increase of 1 rupee in the rent, one subscriber will be discontinued. Find what increased annual rent will bring the maximum annual income of the company. This is very good question for CBSE board. This question can come for your case based question. Case based studies में आपको देखो 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस, उसमें ऑप्शंस बहुत, एक लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, तो दैट इज फॉर 4 मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेलीफोन कंपनी, पहले यहाँ पे मैं इसका इस क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, अब टेलीफोन कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स है? सब्सक्राइबर्स एज 5000 और कंपनी एनुअल रेंट चार्ज कर रही है 3000। ठीक है, एनुअल रेंट कितना चार्ज कर रही है? 3000 रुपीज। बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि फॉर एवरी 1 रुपी इंक्रीज, दैट इज, ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब लोगों से कंपनीज में जो एम्प्लॉयज है सबसे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है कि एग्जैक्टली कंपनी को रेंट बढ़ाना है, कितना बढ़ाया जाए कि कंपनी को प्रॉफिट हो, प्रॉफिट इनकम शुड बी मैक्सिमम। तो प्रॉफिट के लिए लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर जितना अमाउंट इंक्रीज करोगे उतने कस्टमर डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेंट बढ़ेगा, महंगा है, हमें नहीं अफोर्डेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम डिसकंटिन्यू करेंगे दूसरी कंपनी हमारे पास, हम ऐसी कंपनी ढूंढेंगे जहाँ पे रेंट कम हो। ठीक है, बट कंपनी को तो अपग्रेड करना है, प्लान अपग्रेड करना है, तो एनुअल रेंट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने एनुअल रेंट बढ़ाया एक्स, ठीक है, और जितना बढ़ाओगे उतने कस्टमर्स डिसकंटिन्यू कर देंगे, बोलेंगे भाई हमें आपकी कंपनी का कनेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पहले कितना इनकम था कंपनी का? 5000 इंटू 3000। उस टाउनशिप से हमें उस कंपनी का कलेक्शन रेवेन्यू कितना था? 1,50,00,000 रुपीज। अभी इस क्वेश्चन में आप मैथ्स का मैजिक देखोगे कि इनिशियली अमाउंट कितना है, income of the company from that township is 1,50,00,000 rupees। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर्स कम होने के बाद भी कंपनी को प्रॉफिट होता है या नहीं। चलो आते हैं, फिर हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट ओके, दिस इज 4th क्वेश्चन। The number of customers, the number of subscribers is initially, it is how much? Initially it is 5000. Annual rent it is 3000 rupees, but इंक्रीज तो करना पड़ेगा। सो लेट एक्स बी द अमाउंट, लेट एक्स बी द अमाउंट increased in annual rent, increased in annual rent. Therefore number of subscribers become, number of subscribers will be 5000 माइनस एक्स। जितना आप एक्स रुपीज बढ़ाओगे तो एक्स लोग कम हो जाएंगे। ठीक है, 5000 से एक्स कम हो जाएगा, और एनुअल रेंट आफ्टर इंक्रीज इज, एनुअल रेंट will become 3000 plus x।
So income of the company from annual income will be annual income of the company from that township is how much? Number of customers multiplied by annual rent from each customer, right? So it is number of customer, number of subscribers, 5000 minus x, 3000 plus x. एंड कंपनी को इनकम प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है? सो ये मैक्सिमम है या नहीं वो भी हम लोग देखेंगे. लेट्स कंटिन्यू. आई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ओपन द ब्रैकेट, 5000 into 3000 it is 1 crore 50 lakh rupees minus 3000x plus 5000x minus x square, sorry, it is minus x square. So 5000x minus 3000x will become 2000. So 1 crore 50 lakh rupees plus 2000 minus x square. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? After this, differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. di upon dx is equal to 2000 minus 2x. कितनी भी बड़ी वैल्यू हो बट अगर वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव विल बिकम 0. 2000 x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज 2x. ठीक है. नाउ फॉर वैल्यू ऑफ x di by dx is equal to 0. That means 2000 minus 2x is equal to 0. 2x is equal to 2000. X is equal to 2000 upon 2. How much it is? 1000. तो मैक्सिमम है या नहीं 1000 रुपीज इंक्रीज करना, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं. ठीक है. This amount is maximum or not, we have to check. Since di by dx is 2000 minus 2x, again differentiating with respect to x, again differentiating both sides with respect to x. d square I by dx square is equal to minus 2. And if the double derivative is minus 2, that means income of the company is maximum. Telephone company is maximum at x is equal to 1000. अब ये 1000 रुपीज में कंपनी का इनकम मैक्सिमम है नहीं वो भी चेक कर लेते हैं. ठीक है. अभी हमने लिख दिया व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द 1000 रुपीज, सो अमाउंट इंक्रीज इन अमाउंट विल बिकम 1000. तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे? फाइनल स्टेटमेंट विल बी इनकम ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमम, दैट इज 1000 रुपीज. ठीक है. सो फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है द इंक्रीज इन एनुअल रेंट इज रुपीज 1000. द इंक्रीज in annual rent is rupees 1000. Such that condition क्या है? Such that annual income of the company is maximum. Such that annual income of the company is maximum. अब चलो हम लोग रफ वर्क में चेक कर लेते हैं मैक्सिमम है नहीं. जब आप 1000 रुपीज इंक्रीज करोगे तो 1000 कस्टमर्स कम हो जाएंगे, मतलब 4000 कस्टमर्स बचे आपके पास. और रेंट कितना हो गया? 4000 रेंट, 4000 कस्टमर्स. 1000 कस्टमर्स कम हुए. अगर 1000 कस्टमर किसी कंपनी के इस टाउनशिप एरिया से कम होता है तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होना चाहिए, राइट? आपके मन में होगा कि 1000 कस्टमर्स बहुत बड़ा एक नंबर होता है किसी टाउनशिप के लिए कि हाँ मेरे पास इतने कस्टमर्स इतने थे और इतने कस्टमर्स कम हो गए. बट यहाँ पे तो कंपनी तो कितने इनकम कितना हो गया? 1 when you multiply how much it is
1,60,00,000 रुपीज. सी द मैजिक. 10 लाख का प्रॉफिट, मतलब कंपनी 10 लाख रुपीज एनुअल इनकम में ग्रो कर गई है बाय डिक्रीजिंग 1,000 कस्टमर्स कम हुए, लेकिन कंपनी ने 1,000 रुपीज इंक्रीज भी किया एनुअल रेंट में. सो 10 लाख रुपीज बढ़ रहा, तो कंपनी विल प्रिफर दिस एज पर द मार्केट. ये तो कंडीशनल सिचुएशन का क्वेश्चन है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, डिपेंड करता है मार्केट में. कभी कभी कस्टमर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी यहाँ पे कंपनी का इनकम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिपेंड सिचुएशन क्या है. ठीक है, सो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक बार अच्छे से देख लो. सो वर्ड प्रॉब्लम्स के वेराइटीज हमने क्लियर कर दिए हैं. ठीक है, तो एंड आई होप इन क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? check whether the conditions of Rolle's theorem is satisfied by the function. फंक्शन क्या दिया आपको? f of x is equal to, क्वेश्चन नंबर 5, f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x belongs to 1 comma 3. x belongs to 1 comma 3. हमें रोल्स थ्योरम का कंडीशन वैलिड है या नहीं वो चेक करना है बस. ठीक है, चेक करना है फॉर 2 मार्क्स. तो हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे f ऑफ 1. 1 minus 1, 1 minus 2, 1 minus 3. अभी तुम्हें एग्जाम में टाइम पास करना है तो बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, अपने खुद की लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना उसे बोला जाता है. जस्ट बिकॉज फंक्शन दिख रहा है हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 minus 1 will become 0. तो 0 multiply by anything will become 0. ठीक है, तो वो ऐसी बेवकूफी मत करना. अगर फंक्शन पहले देख लो कि एग्जैक्टली वैल्यूज क्या है और फंक्शन कैसा है. ठीक है, मल्टीप्लाई करते बैठोगे बहुत टाइम चला जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे. 3 minus 1, 3 minus 2 and 3 minus 3 and 3 minus 3 will become 0. That means f of 3 will also be 0. Since f of 1 is equal to f of 3, therefore Rolle's theorem is valid. ठीक है, अब इसी के आगे अगर कंटिन्यू करना है, आपको वेरीफाई कराना है रोल्स थ्योरम को, तो इसके आगे हम क्या करते हैं? फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके फिर उसका x का वैल्यू कैलकुलेट करना. हाँ, यहां तक अगर सिर्फ वैलिडिटी चेक करना है, इट इज वैलिड और नॉट, तो आपको ये यहां तक करना है. बट इसकी आगे का पार्ट बताता हूं मैं. अब f ऑफ x क्या हमारा? x minus 1, x minus 2, x minus 3. अब आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ओपन कर दो ब्रैकेट. अगर सिर्फ और सिर्फ वैलिड चेक करना तो यहां तक इनफ है. ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1. पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए आराम दे देते हैं. सो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 into x minus 3. So it will become x square minus 3x plus 2 into x minus 3. और चुपचाप से मल्टीप्लाई करोगे x minus 3 को इस ब्रैकेट से. So x into x square minus 3x plus 2 minus 3 into x square minus 3x plus 2. और डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश मत करना, मिस्टेक करते हो. इससे बेटर है चुपचाप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो. x into x square will become x cube minus 3x square plus 2x
minus 3x square minus minus plus 9x, 3 is a 9, and minus 6. So it will become x cube minus f of x is equal to x cube minus 3 minus 3 is minus 6x square. 9 plus 2 is 11x minus 6. Now differentiating both sides with respect to x. ठीक है, differentiating both sides with respect to x. F dash of x is equal to 3x square minus 6 into 2x plus 11. ठीक है ना. अब इसके आगे आपको वर्क करना है कि सेंस फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x. यहां तक आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. जो क्वेश्चन था एक्चुअल मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया फॉर 3 मार्क्स कि वेरीफाई करने भी सेम फंक्शन बोला जा सकता है. ठीक है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x f dash of x is equal to 0, 3x square minus 12x plus 11 is equal to 0. Factorize it. अब ये तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें. x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a. So x is equal to 12 plus minus minus of minus will become plus root of minus 12 ka square plus minus minus 4a is 3c is 11 upon 2a, that is 2 into 3. So x is equal to plus minus 12 plus minus 144 minus 12 into 11, that is 132 upon 6. So I can write this 12 plus minus root 12 upon 6. X is equal to 12 plus minus 4 root 3. 4 into 3, 6. It will become 12 plus minus 2 root 3 upon 2 root 3 upon 6. We can take 2 common. It will become 6 plus minus root 3 upon 6. It will become 3. So x is equal to 6 plus minus root 3 upon 3. Now both the values अभी चेक करना है ये 1,3 में बिलोंग करता है नहीं. 6 plus root 3 is 1.732, मतलब ये भी बिलोंग करेगा. 6 minus root 3 भी, मतलब these two values belongs to 1,3. Therefore Rolle's theorem is verified. Is it clear everyone? Now next question is again verify Rolle's theorem for the following function x square minus 4x plus 10 on 0,4. फिर से सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें Rolle's theorem वेरीफाई करने के लिए. आज जितना टॉपिक वैसे हमने कवर कर दिया, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. बाकी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी चीजें आनी चाहिए वो हमने कवर कर दिया. इतना भी अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया तो आपको एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए. तो सॉल्व करने के लिए एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो सॉल्व करना. मैक्सिमा मिनिमा हमने कर लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लिया, रोल्स थ्योरम एलएमवीटी कर लिया था हमने, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला कर लिया, देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर लिया है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए हमने. तो आई होप इतना इनफ होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. Question number, I hope it is 4 or 5.
फिफ्थ क्वेश्चन है। सो चेक करो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये, इज इट फिफ्थ और सिक्स्थ? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या दिया आपको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, x बिलोंग्स टू 0,4। बहुत बार हमने किया है, पहला काम एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्रूफ करना है कि ये पहला फंक्शन वैलिड होना चाहिए, रोल्स थ्योरम वैलिड होना चाहिए, उसके बाद x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट x शुड बिलोंग्स टू 0,4। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फर्स्ट एफ ऑफ 0 निकाल लो, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10, दैट इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। एफ ऑफ 4 कैलकुलेट कर लो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 प्लस 10, sorry 4 into 4, that is 16 minus 16 plus 10, again you will get 10, मतलब f of 0 is equal to f of 4 आ गया, और उसका वैल्यू कितना आया हमें? 10। ठीक है, since we can write, since f of 0 is equal to f of 4, therefore Rolle's theorem is valid। और अगर रोल्स थ्योरम वैलिड होती है तो उसका डेरिवेटिव करो एंड c का वैल्यू कैलकुलेट करो। सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, the derivative of f of x is f dash of x 2x minus 4, f dash of c is equal to 2c minus 4, for value of x, for extreme value of x, f dash of c is equal to 0। मैंने बताया था क्यों 0 होता है, वो भी हमने रीजन ये लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, f dash of c is equal to 0, मतलब 2c minus 4 is equal to 0, 2c is equal to 4, c is equal to 4 upon 2, therefore it is 2, c is equal to which belongs to 0,4, therefore Rolle's theorem is verified। ठीक है, जिसको विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो स्क्रीन। Now, next question is the displacement s is equal to t cube minus 4t square minus 5t. Find its velocity and acceleration at t is equal to 0. Question number 7. Displacement s is equal to t cube minus 4t, t cube minus 4t square minus 5t and t is equal to 2 पर हम लोग को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो पहले since velocity is equal to at t is equal to 2 second, since velocity is equal to v is equal to ds by dt, मतलब d by dt of the displacement, that means t cube minus 4t square minus 5t। अब t क्यूब का डेरिवेटिव x रेज़ टू n लगेगा यहाँ पे,
V is equal to velocity is equal to 3t square minus 4 into 2t minus 5. It will become V is equal to 3t square minus 8t minus 5. At t is equal to 2 seconds, velocity is equal to velocity V is equal to 3 into 2 का square minus 8 into 2 minus 5. It will become 3 into 4 minus 8 2 is 16 minus 5. 12 minus 16. 16 minus 16 and minus 5 is minus 21. So it is minus 9. And unit दिया होगा आपको, अगर unit दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, unit per second. नहीं दिया है तो यहाँ पे unit per second, because velocity है, so velocity is equal to minus 9 unit per second. Now acceleration भी calculate करना है, तो what is, since velocity is equal to 3t square minus 8t minus 5, again differentiating with respect to x, again differentiating both sides with respect to t. अभी यहाँ पे with respect to x नहीं, with respect to t derivative करेंगे, because acceleration definition, as per the definition of acceleration, acceleration is the time rate of change of velocity. So acceleration is equal to dv by dt, that is equal to 3 into derivative t square is 2t minus 8, and dv by dt को हम लोग लिखेंगे acceleration. Acceleration is equal to, acceleration A is equal to dv by dt, that is 6t minus 8. At t is equal to 2, it will become A is equal to 6 into 2 minus 8. A is equal to 12 minus 8, that is 4 unit per second square. ठीक है? Therefore acceleration of the particle is, acceleration is equal to 4 unit per second square. Okay, I hope this is clear. Now I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट फंक्शन सेम दिया हुआ है, हमें पूछा है वेरीफाई LMVT, फाइंड द वैल्यू ऑफ LMVT कैन बी अप्लाइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ C. LMVT, रोल्स थ्योरम, 3 मार्क्स 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज एग्जाम में छोड़ना मत, इजी होते हैं, आपको अच्छे मार्क्स देके जाएंगे. अनदर क्वेश्चन इज, फंक्शन जो हमने यूज किया था अभी रोल्स थ्योरम के लिए, सेम फंक्शन दिया है, बट बोला गया है कि रोल्स थ्योरम इज अप्लाइड, रोल्स थ्योरम इज applied 0 to 4, find the value of C. So f of x is equal to, f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. X belongs to 0 comma 4. X belongs to 0 comma 4. बट यहाँ पे वहाँ पे 1 comma 3 था, यहाँ पे फंक्शन आपको x बिलोंग्स टू x का वैल्यू अलग है, LMVT कैन बी एप्लीकेबल है, मतलब क्या, f ऑफ a निकाल लो पहले, f ऑफ 0, 0 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 3, it will become minus 1 into minus 2 into minus 3, that is equal to minus 6. ये हो गया हमारा f ऑफ 0. फिर हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ 4.
f of 4, that is f of b, 4 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 3, that is equal to 3 into 2 into 1, that is 6. f of 4 is positive 6. ठीक है, अब उसके बाद इसके पहले हमने फंक्शन को मल्टीप्लाई किया था f of x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया था। आप बता सकते हो कि हमने मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट किया था, कितना कौन सा फंक्शन आया था वो हमने, आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर से मल्टीप्लाई करने से अच्छा चेक करो। चलो मुझे तो फिर से बैक जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू फर्स्ट दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x minus of minus plus, it is plus 2 into x minus 3, so x square, sorry minus 2x होगा ये, x square minus x minus 2x plus 2, ठीक है। so x square minus 3x plus 2 into x minus 3 and x into x square minus 3x plus 2, इन दोनों ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई कर रहा है, minus 3 into x square minus 3x plus 2. After this, x into x square will become x cube minus 3x square plus 2x minus 3x square plus 9x minus 6. So it will become x cube minus 6x square plus 11x minus 6. ठीक है, this is your f of x. तो f dash of x क्या हो जाएगा बेटा, 3x square minus 6 into 2x plus 11. So f dash of x is equal to 3x square minus 12x plus 11. ठीक है, so f dash of c will be 3x square minus 12x plus 11. ठीक है, using LMVT. What is LMVT? Using LMVT, Lagrange's mean value theorem, f dash of c is equal to, यहाँ पे f dash of x है, so f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. That means 3c square, x के प्लेस पे c पुट कर दो, minus 12c plus 11 is equal to f of b, b is 6 minus of minus प्लस हो जाएगा माइनस 6 एंड अपॉन b माइनस ए 4 माइनस 0, इट विल बिकम 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, दैट इज 3. सो 3c c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 is equal to 3. 3c square minus 12c plus 11 minus 3 is equal to 0. 3c square minus 12c plus 8 is equal to 0. Factorize नहीं हो रहा, 8 3 are 24, but 12 2s are 24. तो फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है बिकॉज ऐड करके आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? c इज इक्वल टू, कैपिटल में यूज करेंगे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कैपिटल सी यूज करेंगे ताकि वो डिफरेंट दिखे। माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस 12 plus minus under the root of b square, b is minus 12 का square
minus 4a, a is 3, c is 8 upon 2a. What is a? 3. So c is equal to 12 plus minus 144, 12 8s are 96 upon 6. So it will become 12 plus minus root 48 upon 6. C is equal to 12 plus minus रूट 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 3/6. सी इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4√3/6. को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. सी इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस √3/6. it will become 2 2s are 2 3s are. So it will become, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 2√3/3. सेपरेट द डिनोमिनेटर. c is equal to 6/6 प्लस माइनस 2√3/6. कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are. तो ये हो जाएगा हमारा c is equal to, सॉरी यहाँ पे 3 है, सॉरी 3, तो यहाँ पे आएगा 2. So c is equal to 2 प्लस माइनस 2√3/3. तो ये कैंसिल होगा, इट √3. सो c इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2/√3. एंड ये दोनों वैल्यूज पे, ये दोनों वैल्यू 0 और 4 के बीच में बिलोंग करता है. देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू 0,4. देयरफॉर LMVT कैन बी applicable. LMVT is verified. ठीक है. ओके चलो, एक आई थिंक सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया. LMVT एक मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन और है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं. आई होप इतना क्लियर होगा सबको. ठीक है. एज पर द डिमांड नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो पूरा का पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में हम लोग वाइंड अप करेंगे आज के दिन ही, आज इवनिंग में. उसके बाद we'll move to the another topic, that is probability distribution. फिर हम आते हैं सीधा मैथ्स 1 पे. बहुत कम टाइम बचा है आपके पास फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स. CBSE के पास तो थोड़ा और टाइम है, बट स्टेट बोर्ड के पास सिर्फ आपका पास यही वीक है बाकी सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए. उसके बाद आप इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे. ओके, यस, इज इट क्लियर एवरीवन? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं आपके. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें. द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ फर्म of selling X items per day. P of X is equal to, find the number of items the firm should manufacture per day to get maximum profit. Also find the maximum profit. तो प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 9. P of X is equal to, P of X is equal to 150 minus X, 150 minus X into X
-1625, -1625. So P of x is equal to 150x minus x square minus 1625. अब ये चेक करना है इज इट मैक्सिमम और नॉट. फंक्शन चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार फिर से. 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625 प्रॉफिट फंक्शन है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. P dash of x is equal to 150 minus 2x. 16 x का डेरिवेटिव 1 होता है. 1625 का डेरिवेटिव विल बिकम 0. For value of x, p dash of x is equal to 0 because extreme values है. एक्सट्रीम वैल्यू पे आपको पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज 0. दैट मींस 150 minus 2x is equal to 0. 2x is equal to 50. X is equal to 150 upon 2, that is 75. So the manufacturer should sell 75 atoms, right? The firm should per day, right? 75. When x is equal to 75, the profit is maximum. Maximum है या नहीं, कितना सेल करना चाहिए उसको, that is 75 atoms per day सेल करेगा तो profit is maximum. वो भी चेक करना maximum है नहीं. Since p dash is equal to, अब मैक्सिमम मिनिमम कब चेक करते हैं बेटा, कहां से पता चलता है मैक्सिमम है मिनिमम है? दैट मींस डबल डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. P double dash of x is equal to 150 का डेरिवेटिव 0 minus 2 which is less than 0. अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है, नेगेटिव आता है तो प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम. पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट फंक्शन इज मिनिमम. ठीक है, तो सिंस डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम व्हेन x is equal to 75. अब कितना प्रॉफिट होगा वो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम. यहां पे पुट x is equal to 75 in equation 1. What is equation 1? P of x maximum is equal to 150 minus 75 into 75 minus 1625. That will become 75 into 75 minus 1625. Multiply कर दो 75 into 75. 7 5 5 are 25, 5 7 are 35 plus 2 37, 0 35, 49 plus 3 is 52. 5, it is 5625. 5625 minus 1625 अगर माइनस करोगे तो ₹4,000 will be the profit. If the person is selling 75 atoms per day or जब 75 atoms per day सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. प्रॉफिट कितना होगा पर डे का? दैट इज ₹4,000. ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो मैक्सिमम क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. सारे टॉपिक्स फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या करना है. फर्स्ट टॉपिक में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बाद एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, फिर प्रॉफिट फंक्शंस, सॉरी कोऑर्डिनेट्स होगा. ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला हमने किया है, फिर एलएमवीटी, रोल्स थ्योरम एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत रेयरली आता है बट अगर आ गया तो आप चेक करोगे कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू चेक करना है. देन लास्ट टॉपिक, लास्ट इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस किए हुए. हाँ, प्रैक्टिस करो जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया और जो भी क्वेश्चंस और भी आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है करो. उसके बाद अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो. ठीक है, इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये डाउट है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल.
नेक्स्ट टॉपिक विल बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा एक बेसिक देख करके आना, फॉर्मूलाज देख करके आना। आज ही इवनिंग में हम लोग बाइनोमियल भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। लाइक करना लोगों अपने फ्रेंड से बोल शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो चैनल, ठीक है। जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।